Hello everyone, I am Sugan, your assist teacher from SURAJ School in Mahendragarh. Welcome back to YouTube channel SURAJ Group of Education. Today my topic is Weather and Climate Part 2nd. In previous video, we have already discussed about the definition of weather, climate and element of weather and climate and affecting factor of climate. In this video, we will discuss about the climatic zone of the world. So let us start. Climatic zone. So the temperature and amount of rainfall determine the climate of a place. जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, तापमान, एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल और बारिश की मात्रा किसको डिटरमाइन करती है, किसी भी स्थान के क्लाइमेट को डिटरमाइन करती है, निश्चित करती है. डिटरमाइन मीन्स क्या होता है, निश्चित करना. सो निश्चित करती है. द होल वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू क्लाइमेटिक रीजन्स और हीट जोन्स अकॉर्डिंग टाइप ऑफ क्लाइमेट दे हैव. जो हमारा होल वर्ल्ड है, पूरे विश्व को किस में डिवाइड कर रखा है, क्लाइमेटिक रीजन और हीट जोन्स में डिवाइड कर रखा है. अकॉर्डिंग दे क्लाइमेट दे हैव, उनकी जो भी क्लाइमेट है, उनकी जिस प्रकार की जलवायु है, उसके अकॉर्डिंग उनको हीट जोन में डिवाइड कर रखा है. द जो रीजन है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. दे रीजन हैव 3 पार्ट्स. दे जोन यू कैन आल्सो हैव दे जोन have 3 types. 3 types. First is the frigid zone. Frigid zone. Second is the torrid zone. And third is the temperate zone. Temperate zone. Now in this video we will discuss about the frigid zone, torrid zone and temperate zone. Now we will discuss by a diagram these zones. जो हमारा फ्रिगिड जोन है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, इट्स ऑल्सो कोल्ड जोन, क्योंकि जो यहाँ पे है ना क्लाइमेट है वो मोस्टली कैसा होता है, कोल्ड होता है. सो नाउ वी विल डिस्कस हियर बाय ए डायग्राम. This is our world. Okay, and which type of latitude? Here is the west direction, east direction. This is the south pole, and this one is the north pole. North pole. This latitude is called equator. Equator. Latitude means क्या होता है, an imaginary lines that drawn by east to west. जो ईस्ट से वेस्ट तक ड्रॉ की जाती है उसको हम बोलते हैं latitude. And this is the equator latitude. Equator latitude. That is the longest latitude. जो हमारा इक्वेटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है. और व्हाट इज द इक्वेटर? एन इमेजिनरी लाइंस दैट डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 हाल्व्स. हाल्व मींस क्या होता है, भाग में 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, and second one is the southern hemisphere. Okay, now we will discuss climatic zone. Above the equator कौन सी लाइन हमारा लैटिट्यूड है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. and above the tropic of cancer which latitude lies, this is the arctic circle. And below the equator this is the tropic of Capricorn. And below that tropic of Capricorn is the Antarctic circle.
Antarctic Circle. Now we explain here zones between the Cancer, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Which zone lies? This is the torrid zone. Torrid zone. Okay, between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and between the Arctic Circle and the Tropic of Cancer, which zone lies? Here is the temperate zone. Temperate zone. Between the North Pole and the Arctic Circle, which zone lies? Here is the frigid zone. Frigid zone. Between the, here also the same situation, between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle have a temperate zone. Between the South Pole and the Antarctic Circle have a frigid zone. Frigid zone. Okay, these zones are lies in this globe. And which type of climate are present in these zones? In frigid zone, जो हमारा frigid zone होता है, so we discuss here. In short में write कर देते हैं. This is our TC, Tropic of Cancer. This also is TC, Tropic of Capricorn. This is our Sun. We know Sun is a star. And which gases are present in the Sun? Helium and हाइड्रोजन. ओके, जो हमारे सन एक स्टार है, जो स्टार्स में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होता है? हीलियम एंड हाइड्रोजन होता है. वन हाइड्रोजन प्लस वन हाइड्रोजन मेक द हीलियम एंड एनर्जी. सो इसका सोर्स जो सन का एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होती है? हीलियम एंड हाइड्रोजन होती है. सो इसकी जो रेज होती है, जो डायरेक्ट रेज पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है डायरेक्ट रेज? कौन सी लैटिट्यूड पे पड़ती है? इक्वेटर लैटिट्यूड पे. सो हेयर जो हमारा टॉर्रिड जोन है, टॉर्रिड जोन मीन्स होता है हॉट जोन. सो हेयर पे क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट क्लाइमेट होगा. ओके, हॉट क्लाइमेट. एंड टेम्परेट जोन एंड फ्रिगिड जोन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. जो हमारा टेम्परेट जोन है और फ्रिगिड जोन है, वो जो सन की रेज रिसीव करता है वो स्लैंटिंग रेज में होती है. मतलब जो उसकी डायरेक्ट रेज में पड़ के स्लैंटिंग में होती है. ओके, सो हेयर टेम्परेट जोन में जो क्लाइमेट होता है, नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड. न तो ज्यादा यहाँ पे गर्म होता है, न ही ज्यादा कोल्ड मौसम होता है, ठंडा होता है. एंड फ्रिगिड जोन, मोस्टली जो फ्रिगिड जोन होता है मोस्टली कवर्ड विद थिक शीट ऑफ आइस, बिकॉज जो हमारे स्लैंटिंग रेज होती है वहां पे बहुत कम रिसीव करता है फ्रिगिड जोन. सो हियर क्लाइमेट इज द वेरी कोल्ड एंड मोस्टली कवर्ड विद थिक शीट ऑफ आइस. सो दिस इज about the climatic zone of the world. I hope you understand. Thank you to all and have a nice day.